Hey guys, welcome back. So today we are going to study cost sheet. The meaning of cost sheet is that cost sheet is the statements in which the various costs incurred of business operations at different stages, and these costs are recorded in a fixed format that is called cost sheet. In another language we also understand this, that द वेरियस कॉस्ट मीन्स इट मीन्स बिजनेस में जितने भी कॉस्ट जो है इनकर्ड होती हैं और डिफरेंट स्टेजेस पे, और इन कॉस्ट को हम लोग एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में नोट डाउन करते हैं फॉर मेंटेनिंग आवर बिजनेस अकाउंट्स. दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट शीट. इन कॉस्ट शीट from cost sheet we determine the total cost or expenditure which are made by organizations, along with the cost incurred on each product and services which are rendered by customer or for particular period. It means that the total cost or the total product और total expenditure जो business ने खर्च किए हैं, जो organizations ने खर्च किए हैं, along with the cost incurred on each product. It means जितने भी हर एक प्रोडक्ट पे कॉस्ट incurred हुई है और जितनी भी सर्विसेज हम लोग ने कस्टमर को प्रोवाइड की हुई हैं फॉर एक पर्टिकुलर पीरियड में, उन सभी को हम लोग कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करते हैं. So this is the meaning of cost sheet. And the next is component of cost sheet. It means what are the various components or what are the various heads of cost sheet. The first cost is prime cost. Prime cost, that is called initial cost, like when we are going to start a business and various raw material, labor, wages are needed to starting business. So for starting business, the first cost which are used, that cost are called prime cost. And prime cost, how we calculated prime cost, when we add raw material, wages, labor and direct expenses, then we got prime cost. And the second cost is work cost or factory cost. After we arranging raw material, labor and wages, then and the next step is to start our factory or work, then work cost are then the second head is work cost. The work costs are calculated by summing up of prime cost and factory overhead. वर्क कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्क कॉस्ट हम लोग ने फर्स्टली प्राइम कॉस्ट ऐड कर लिया और जितने भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हो रहे, ओवरहेड्स मीन्स इट मीन्स जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं टू स्टार्टिंग अ बिजनेस इन अ फैक्ट्री, दैट कॉस्ट आर adding up, and then we summing, then we got our factory cost of work cost. His formula are also written: prime cost plus factory overheads plus opening stock of work in progress. It means that जितने भी हमारा स्टॉक बचा हुआ होता है पहले का वर्क इन प्रोग्रेस का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जितने भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का, आफ्टर एडिंग देन वी गॉट वर्क कॉस्ट. The third head is cost of production. Cost of production means the cost of production includes all the direct and indirect cost. It means जितने में हमारी direct cost, indirect cost होती हैं, जैसे कि material, labor and other expenses, फिर उन सबको ऐड करके हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हम लोग निकाल पाते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर्मूला क्या है? वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट. द थर्ड इज टोटल कॉस्ट. दिस इज द फाइनल वैल्यू और द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज in business. It can be determined by adding all the selling and distribution expenses. Selling and distribution, in total cost we adding selling and distribution expenses, because here product are
going to sell or ready to sell in market. So the total costs are calculated by the cost of production of goods sold and plus selling and distribution head. So this is the head of cost sheet and components of cost sheet. And we also study the meaning of cost sheet. Then we study the format of cost sheet. This is the format of cost sheet. And firstly we know we write the company name or month's name of cost sheet which are made, and the second is units are means it means कितने units कितने products हम लोगों ने produce किए हैं या फिर company produce किए हुए हैं. So in particular we are adding direct material, direct wages, direct or chargeable expenses, and after adding these we got prime cost. In total cost we write total cost, and this side cost per unit. It means पर यूनिट की कॉस्ट प्रोडक्ट में कितनी हुई है इधर लिखेंगे, एंड द टोटल कॉस्ट वी राइट दिस साइड. The prime cost we got, and after adding work overhead or factory overhead we got factory overhead, and the second is office overhead. After adding we got cost of production, and selling and distribution overhead we got total cost. This is the cost sheet format and the cost sheet meaning. So if you like this, please subscribe my channel.